So could you scroll up? Sorry, my mic was off. My bad. Omar, to answer your question, these reactions are regarding acidity of alpha hydrogen. Okay. And first of all, in aldehyde and ketones, we have to first of all see if there is an alpha hydrogen or not in the aldehyde or ketone. So I'm starting with the easy example. First, understand this reaction, how it happens. We have CH3, carbon double bond O, and hydrogen. Now, what is the functional group? This is the functional group here, okay? The CHO is the functional group. If this is the functional group, this will be your alpha carbon. This will be your alpha carbon. Now, if this alpha carbon, it contains hydrogen, so this can undergo aldol condensation. This can undergo aldol condensation. And please remember, it undergoes self-condensation. Okay? Self se hota hai. That means you will have two molecules of acetaldehyde. Asta, are you done? Let me know now. Yes, sir. Done. Done. Okay. Now this is acetaldehyde. What will be the other reactant here? Tell me. There will be one acetaldehyde and दूसरा भी क्या होगा? The other one will also be acetaldehyde only. Okay, the other one will also be acetaldehyde. Now, here you write it like this. पहला जो आपके पास whatever ketone or aldehyde you have, you write it like this in this manner. Okay, so carbon atom containing two groups. अगर यहाँ पे CH3 होता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी. Plus you write the other carbons alpha carbon. आपने अल्फा कार्बन लिखा और अल्फा कार्बन के सारे हाइड्रोजन को शो करके लिखेगा. Hydrogen, 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 and then you can just write CHO. ठीक है? You can just write CHO. Now what you need to do, you just need to make a bond between these two carbon atoms and get this hydrogen there. हम आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं. This double bond O gets OH. This carbon and carbon forms a bond. Okay, so this is the carbonyl carbon and the alpha carbon. ठीक है, दोनों के बीच में bond बनता है. You have this hydrogen as it is. This hydrogen is as it is. This hydrogen is as it is, and then you have CHO. Is it clear, guys? Yes or no? Please tell me. This happens in the presence of OH negative, some base. Okay, this happens in the presence of OH negative. Is this clear, guys? Can you, if I give you some product, this is aldol. Okay, this is aldol. See, you have aldehyde and you have alcohol. So this is known as aldol, and this is what? This is alpha carbon. This is beta carbon. So beta carbon has hydroxy. So this is also known as beta hydroxy. Aldehyde. ठीक है, यहां तक जो आपका रिएक्शन है ना, जिसको बोलते हैं aldol रिएक्शन, जिससे आपको aldol मिलता है. Then further what you can do, this aldol here, CH3 carbon OH hydrogen and this CH2 को ऐसे लिख लीजिए आप, CHO. If you heat it in the presence of H plus, then this is going to get liberated. ठीक है ना? ये बेसिक आपका कौन सा रिएक्शन है? This is dehydration of alcohol. If you can see that, this is dehydration of alcohol. Yeah, tell me. Is it necessary to show the self concept? Sorry, what, Omar? Omar, I can't hear you now. Okay.
Is it necessary? It depends on the question, actually. If they're asking you to write about aldol condensation, then you have to show it. But if they are just asking, if they are just giving you this now, let's suppose they are giving you CH3, CHO, 2 molecules and OH negative. ठीक है, in the presence of base. तो इसका मतलब वो लोग पूछ रहे हैं आपको aldol reaction जो self condensation है यहाँ पे. Okay. And is it necessary to write both of these reactants? No, it is not necessary to write both of these reactants. But if you write it like this, initially आपको आसानी होगी product बनाने में. Can all of you understand what is happening in the product? Yes or no? See, this hydrogen आपको यहाँ पे भेजना है. जैसे ही आप hydrogen यहाँ पे भेजेंगे तो carbon carbon का bond खत्म हो जाएगा, and you will have to attach this carbon and this carbon. Okay. So the carbonyl carbon from one aldehyde or ketone and the alpha carbon. Carbonyl carbon और alpha carbon के बीच में bond बनाना है. इसको याद रखिएगा. Double bond O gets converted to OH. ये हो रहा है आपके साथ. And then carbon double bond forms the bond with alpha carbon. ये हो रहा है आपके पास. ठीक है, ये दो मेन चीज हो रही. Can I move on to the next example? Yes or no, please tell me. Wait, sir. This is a request to everyone. पहले लिख लिया कीजिए, उसके बाद डाउट्स पूछा कीजिए. कई बार लिखने से भी आप लोगों के डाउट्स काफी ज्यादा क्लियर हो सकते हैं. ठीक है, तो पहले लिख लिया कीजिए. Yeah, done everyone? Yes, sir. Anyone still writing? No? Okay, great. So see, the aldol reaction is more important, okay? Because उसके बाद जो dehydration of alcohol है वो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा. Please see, if I am going to have an aldehyde with 3 carbon atoms. So we have CH3, CH2, C double bond O and hydrogen, you will write it like this. ठीक है? और जो अगला आपके पास कार्बन आटम है ना, the same molecule, this one, you are going to write it like this. This carbon will be here. ठीक है? इसके पास क्या है? This has one hydrogen here. This has another hydrogen here. Then it has एक इसके पास CH3 है यहाँ पे. Then it has a hydrogen above. And it also has what? CHO. ठीक है? So please remember the carbonyl carbon and the alpha carbon. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है आपको. And this one hydrogen will go there. Please see very carefully here. I am writing CH3, CH2. देखिए 1, 2, 3. 1, 2, 3. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा 1, 2, 3 में आपके पास OH लग गया. ठीक है, 3 का बॉन्ड बनना है 2 के साथ. 3 का बॉन्ड आपने बना दिया 2 के साथ. 3 हो गया. दिस इज 2. अब इस 2 का बॉन्ड है आपके पास एक CH3 के साथ एंड एक CHO के साथ. प्लस हियर यू विल हैव द हाइड्रोजन एज इट इज. ओके, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एज इट इज इस कार्बन एटम पे भी. So this is your aldol product. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. And इसके बाद तो आपके पास जो H plus in the presence of heat बनाना है, that is going to be very easy. You just remove these two. You will get 1, 2, 3, 4, 5.
4 5, so CHO, and in the second carbon you have a CH3 group, and this is your aldol product and an alkene here. ये वाला बना के दिखाइए हमें। ऐसे दिया रहेगा आपको सवाल में 2 NaOH A H plus and heat B. Tell me what are A and B. The new CC bond is formed between, हम 10 बार दोहरा रहे, गलती नहीं करना है किसी को, ठीक है? 10 बार पढ़िए इस लाइन को, समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बोल बोल के देखिए अल्फा कार्बन है यहाँ पे, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड। यहाँ पे ढूंढिए, फिर उस तरह से लिखिएगा अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन मेक्स न्यू CC बॉन्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सैफ आगे आप कीजिए। अच्छा आगे किया आपने, okay। हाइड्रोजन छोड़ गया है आपका, हाइड्रोजन आपने मतलब छोड़ दिया H प्लस के बाद वाले में। OH और H ही तो जाएगा ना बस।
हाइड्रोजन छोड़ दिया आपने एक कार्बन में, उसको ठीक कर लीजिएगा बस। ओके नबील, लुकिंग Okay, एट sir. योर आंसर नाउ। CH2 नहीं, सी, वहां पे CH। नबील, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. 1 2 Sir, 3 can you hear 4, me? व्हाट इज द अल्फा कार्बन 1 2 3 4 में से? 2, sir. तो फिर आपने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए, बस यही ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके गाइस, अभी गलती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा हम डांट देंगे और कुछ नहीं, ऐसा उतना डांटेंगे भी नहीं। लेकिन प्लीज याद रखिए, अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन को प्लीज ध्यान में रखिए। जिन लोगों ने नहीं किया है, फिर से करके देखिए, अल्फा कार्बन है या नहीं है, आइडेंटिफाई कीजिए अल्फा कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 2 3 4, खलील चेकिंग योर आंसर। ओके 1 2 3 4, ठीक है, and yep, that is correct. Yeah, yes, Khalil seems correct. Salman, looking at your answer, the first one, no, that is not right. Salman, your answers are not right. ऐसे कीजिए भाई, जब तक इस तरह से लिखिएगा नहीं, कहाँ से आएगा आप लोगों को? आप लोगों को लगता है कि एक बार में आंसर सीधा टपक जाएगा दिमाग में, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। ओ आस्था, अगेन वही दिक्कत है, आप लोगों ने वैसे लिखा ही नहीं जैसे हमने कहा था आप लोगों को लिखने के लिए। आप लोग को अल्फा कार्बन को बिल्कुल उसके मुंह के सामने रखना है, दूसरे एल्डिहाइड के, ठीक है? जिसने उस तरह से लिखा उन लोगों का सही हो रहा है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन प्लस। अब यहाँ पे आप इस CH2 से स्टार्ट कीजिए, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, और झट बाद में CHO। अब इधर नीचे लिख दीजिए आप CH2 CH3, ठीक है? जब तक जिन लोगों ने इस तरह से नहीं लिखा उनका आंसर नहीं आएगा, अभी तो फिलहाल नहीं आएगा। सबसे पहले NaOH, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4, CH3 CH2 CH2, carbon atom with the OH, the hydrogen as it is. Now this carbon atom with one hydrogen, and CH2 CH3, CHO as it is. Now further H plus and heat, these two will go away. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and this is CHO 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? CH2 CH3, और फिर यहीं पे डबल बॉन्ड। So mine is correct now. आपको सही है? Yes, sir. अच्छा, वो CH3 नहीं है नीचे आस्था? Sir, it's only H. अच्छा, वो आपने काट दिया है, ठीक ठीक ठीक, ओके, हाँ. वो CH3 दिख रहा था हमें। हाँ, वही हम देख रहे थे कि लास्ट में आपका आंसर डायरेक्ट, लास्ट वाला आंसर सही आ रहा है आपका वैसे। हाँ ठीक है, आपका सही है। देखिए, डायरेक्ट अगर किसी को आंसर करना है ना, तो आप लोग ध्यान ये रखना पड़ेगा, all carbons of one molecule and 2 carbons of another। पहले इसको बना लीजिए। तो हमारे पास आपको क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस, टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल?
We have 1, 2, 3, 4 carbon atoms. So what is the name of this molecule? क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 कार्बन से क्या नाम हो जाएगा? Butane. Butanal. Okay, it will be butanal. So butanal के 2 molecules you are going to need. How many molecules of butanal? You are going to need 2 molecules of butanal. Please इन सब चीजों को ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? आधे लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं. Please ध्यान से सुनिए. How many molecules are you going to use? Please turn your mic on and tell me of butanal for self-Aldol condensation. How many molecules of butanal will be used? How many molecules of butanal will be used, guys? Sir, कृष्णा खलील, प्लीज माइक ऑन करके आंसर कीजिए. यहाँ पे लिखा हुआ है, डांट सुनिएगा अभी आप लोग सब कोई. How many molecules? 2. Thank you very much. 2 molecules. Now, एक molecule के all carbon atoms. That means how many carbon atoms? 4 carbon atoms. So you draw 4 carbon atoms like this. 1, 2, 3, 4 carbon atoms. Then all carbons of one molecule and 2 carbons of another. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बना लिया आपने. Now last carbon, वो CHO कीजिए. लास्ट कार्बन को आपने क्या कर दिया? CHO कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? सेकेंड लास्ट कार्बन, add remaining कार्बन्स. एक क्या आपने 4 यूज किए? टोटल हमारे पास कितने थे? 4 + 4 8 थे, राइट? एक आपने कितना यूज कर लिया? 4 यूज कर लिया, प्लस दूसरे का 2. बचा कितना आपके पास? टेल मी हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिमेनिंग? 2. ठीक है. तो सेकेंड लास्ट कार्बन में आपने क्या डाल दिया? इथाइल ग्रुप. ठीक है. थर्ड लास्ट कार्बन, gets OH. ठीक है. तो ये आपको क्या बन गया? एल्डोल बन गया. अब जब आपको यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है तो कहाँ से निकालिएगा? यू विल रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर ओनली. मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम्स, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा. ठीक है. प्लीज याद रखिएगा, ये CHO के केस में हो सकता है सिर्फ, या एल्डिहाइड देन ओनली. लास्ट के 3 कार्बन एटम्स में ही सारा खेल है. ठीक है. लास्ट कार्बन एटम CHO, सेकंड लास्ट कार्बन एटम में रिमेनिंग कार्बन, रिमेनिंग जो अल्काइल ग्रुप बचा है, थर्ड लास्ट कार्बन में OH. ठीक है. उसके आगे लिखिए ऑन एडिशन H+ and heat, second and third carbon get C double bond C. ठीक है. ये आपको पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा. Done everyone? Yes or no? Please tell me. सबने लिख लिया? आगे बढ़े. One minute, sir.
Okay. घर में जाके दोबारा खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी अभी तक हम लोगों ने 3 रिएक्शंस देख लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के। ओके, प्लीज ट्राई टू रीडू देम इन योर होम। फिर स्टडी के टाइम में खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। Then everyone, yes or no, please tell me. Is everyone done? Yes, sir. Right. Example of a ketone. So in ketone, I'm taking acetone, that is propanol. Same है आपके पास CH3, C double bond O, इसका CH3 यहाँ पे plus. Now both of these are alpha carbons. ये भी आपके पास alpha, ये भी alpha आपके पास. दोनों में से किसी एक को भी ले लीजिए. Like this. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. C double bond O, CH3. Presence of OH negative. This will go there, right? So you will get CH3, C double bond O. This is having CH3 as it is. Oops, sorry. This will be COH now, after OH. Then you will have CH3. Then this carbon with its 2 hydrogen, C double bond O, CH3. Here also the same thing is happening. Alpha carbon and the carbonyl carbon is forming a bond. Alpha carbon and the carbonyl carbon is forming a bond. Then H plus and heat. So यहाँ पे जो आपके पास एक CH होगा ना, that is going to get evaporated. You will get CH3, C, CH3 double bond CH, C double bond of CH3. This is known as ketol. वो aldol था, ये क्या है? Ketol. Now write a note. When we have a reaction of acetophenol, that is C double bond of CH3. Now we have only one carbon atom that is containing hydrogen. Okay, so it has 2 adjacent carbon, this green carbon and this red carbon atom. This red carbon atom has hydrogen, but this green one does not have hydrogen. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको. Plus another molecule of Are you saying anything, Nabil? Sir, the second one, ketone, after ketone, what is the product, sir? Like after dehydration. This one? Yes, sir. You're asking me the name. Yes, sir. Name you can write it. No? Functional group will be on. Then you have En, and then 1, 1, 2, 3, 4, 5. So this will be 4-methyl pent 3-ene
2 ohm. Okay, please see here. In this particular case, when you have acetophenol, then this carbon and this carbon are going to form bond. So you'll have something like this. COH, CH3 as it is. Now this carbon atom, it has one hydrogen and a hydrogen here. Then you have C double bond O. Then again the phenyl group like this. Now, first of all, you have NaOH. Now this reaction does not require any H plus, any acid or heat. It automatically undergoes dehydration. Okay, so benzene ring is also written as pH. So you have pH, C double bond C. This has a CH3 group. This has a H group. C double bond O. Let me make some space. C double bond O, again phenyl group. Please write here. The product formed by condensation of aromatic ketone automatically, oh wait a second, ऐसे लिख लीजिए आप इसको. देखिए इसका जनरल नाम जो है ना, यू कैन कॉल दिस एल्डोल आल्सो, ठीक है ना. प्लीज इसमें यहाँ पे आप लोग ऐसे मत कीजिएगा कि कीटोल का कीटोल ही रहेगा. ये आपके पास जो पहला रिएक्शन होता है बेस के साथ, उसके बाद क्या बनता है, एल्डोल इन जनरल. ओके, इन जनरल ये भी आपके पास एल्डोल है, ये भी एल्डोल है, बट स्पेसिफिकली ये कीटोल है. सो प्लीज राइट हियर aldol formed by aromatic carbonyl carbons automatically undergoes dehydration. Therefore, the product is always alpha, beta unsaturated aromatic aldehyde और कीटोन. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास aldol नहीं बनेगा. aldol जैसे ही बनेगा वो automatically to dehydrate and it will give you, and it is going to give you the alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. Right, another point. HCHO क्या है ये, formaldehyde. And benzaldehyde, formaldehyde, benzaldehyde
बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? CHO and benzophenone. Do not undergo self-aldol condensation. Because they don't have alpha hydrogen. चलिए चैट में आप लोग एक चीज बताइए, इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? How many alpha hydrogens can you see in this compound? Please send the answers in chat. Number of alpha hydrogens in this compound. Yeah, keep sending the answers. I've got answer from Khalil Astha. I think who else has sent? Nabil Ahmed, Muhammad Saif, Muhammad and Umar also. Khalil also. Nabil Ahmed has sent the answer. Yeah, please send the answers, guys. Ishma, who all are present here. अरे भाई Khalid, I am asking how many alpha hydrogens are there? सवाल भी नहीं सुन रहे हैं. How many alpha hydrogens are there? Ishma, please send the answer. Nabil Khan, Salman, please send the answers, guys. How many alpha hydrogens are there? है ना, इसी से पता चलता है कितने लोग ध्यान दे रहे हैं क्लास में. कुछ लोगों के तो आंसर भी नहीं आ रहे हैं. अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर पूरी पूरी रिएक्शन हुई है अभी, बट ये नहीं दिख रहा है आप लोगों के अल्फा हाइड्रोजन कितना, मतलब ये भी नहीं आप लोग बता पा रहे हैं नहीं है कितना है ना. How many alpha hydrogens? Raise your hand if you don't know what is the meaning of alpha hydrogen. Raise your hand if you don't know the meaning of alpha hydrogen. और सबको पता भी है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नबील खान ने आंसर नहीं किया है. हिश्मा ने आंसर नहीं किया है. हिश्मा, can you tell me what happened? How many alpha hydrogens? What is the problem? Why are you not answering? So there are no alpha hydrogen. तो आप आंसर कीजिएगा ना. क्या आप आंसर नहीं कीजिएगा? चैट नहीं काम कर रहा है क्या आपका? सलमान आंसर. ओके, बहुत बढ़िया. अरे भाई मेरे, इवन आस्था हैज रॉन्ग आंसर. हाँ आस्था, दिस इज, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना आस्था. ये सर नो. Sir, दिस इज द CH2 फंक्शनल is ग्रुप. the functional group, no? हाँ CHO फंक्शनल ग्रुप है. तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कुछ नहीं होता, अल्फा कार्बन होता है. अल्फा कार्बन में जो लगा हुआ रहेगा वो हाइड्रोजन होता है. सो इफ यू हैव CH3 CHO, सो दिस इज योर अल्फा कार्बन. पहले तो इस पे लगे हुए जितना हाइड्रोजन है, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, गॉट इट गाइस? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. So this will have how many alpha hydrogens? Salman, how many alpha hydrogens here? Tell me. Yeah, it will be having 0. ये तो लिखा था हमने. एक तो ना आप लोग ये भी तो ध्यान दीजिए कम से कम. HCHO यहीं पे तो लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं. हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं करते हैं क्लास में. ध्यान नहीं रहता आप लोगों का. चलिए, राइट रिमार्क्स.
the alpha hydrogens of aldehyde and ketones are slightly acidic due to the minus I of carbonyl group. Due to the minus I of carbonyl group. Right, next point. Also, the conjugate base is resonance stabilized. So please see. This will have something here. Okay, this carbon can have anything here and here, but you should have at least one hydrogen. Now, when you have OH negative, and this OH negative will attack onto this hydrogen atom. This hydrogen is going to give the electrons to this carbon atom. This is going to give you carbon with a lone pair with and negative charge, 2 bond as it is, single bond carbon, double bond oxygen. Now this oxygen, this lone pair electron of the negative charge is going to go here. This is going to go here, and you will get a resonance structure that is like this: C double bond C, single bond O negative. Okay, so these are the two resonating structures, and that is why this aldehydes and ketones and their alpha hydrogen is slightly acidic. Okay, this ion is known as enolate ion. Okay, this is known as enolate ion. Done everyone? Yes or no? Please tell me. 1 minute, sir. So these are the two reasons. ठीक है ना? जब आप लोग को पूछा जाएगा why is alpha hydrogen of aldehyde and ketone acidic, then you will write due to minus I of carbonyl group and the conjugate base is resonance stabilized or resonance stabilized conjugate base. ठीक है? These are the two reasons. Done, sir. अब यहाँ पे लिखिए एक पार्ट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. So can you scroll up? Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now, please see cross aldol condensation. In this, we are going to do cross aldol condensation. It is going to have two different aldehydes or two different ketones. ठीक है? So आपके पास two different aldehydes और two different ketones के साथ जब aldol condensation करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Cross aldol condensation. Please write when aldol condensation is done between two different
between two different aldehydes and या फिर और two different ketones then it is called cross aldol condensation. ठीक है? So in this case we are taking example of CH3CHO, ठीक है, plus we are going to use CH3CH2CHO. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? See, all the molecules of ethanol does not know that there is a molecule of propanol. Please remember that. You will not have only one molecule इसका and दूसरा molecule इसका. You will have multiple. You will have millions and millions and millions of molecules of both ethanol, ये आपका पहला वाला है, and propanol. That is the second one. But all the ethanol molecules do not know that there are propanol molecules. All the propanol molecules do not know that there are ethanol molecules. That is why some of the ethanol will undergo self-aldol condensation. Some of the propanol will go self-aldol condensation. सबसे पहली बात, ठीक है? तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले in the presence of OH negative, इसकी अगर हम बात करें, that is your ethanol. How many carbons are we having? We are having 2 carbon atoms. इसके 2 और इसके दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके भी 2, 1 2 3 4. लास्ट एटम को आपने क्या दे दिया? लास्ट एटम को आपने दे दिया यहाँ पे CHO. You have 2 carbons here. इस कार्बन को कुछ मिलेगा? बताइए. सेकंड लास्ट कार्बन में क्या मिलता है? The remaining carbon atoms. Do we have any remaining carbon atoms? No, we don't have any remaining carbon atoms. What is the third last get? It gets OH. अब उसके आगे आप जब H+ कीजिए and heat दीजिएगा CHO with a double bond like this. Is this clear? Yes or no? Please tell me. हाँ या ना बताइए. Yes, sir. This is by self aldol of CH3CHO. ठीक है? उसी तरह से सेल्फ aldol कंडेंसेशन किसका होगा? प्रोपेनल मॉलिक्यूल का. प्रोपेनल में कितने हैं आपके पास? 1 2 3, 3 इसका और 2 किसका? 2 दूसरे वाले मॉलिक्यूल का. So you'll write 5 molecules, right? 5 carbon atoms. 1 2 3 4 5. Last carbon atoms gets CHO. Second last carbon atoms gets the remaining CH3. ठीक है ना? 3 थे, 2 यूज किया था हमने. Third last gets OH. कर दीजिए आप इसको क्या? Heat in acid. This OH and here hydrogen, it is going to get removed. ये रहा CH3 और यहाँ पर है आपके पास डबल बॉन्ड इस तरह से. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. ठीक है ना? ये किसके हुआ? This is by self aldol of CH3 CH2 CHO. ठीक है, ये ध्यान रखिए. अब आपके पास ये दोनों तो कौन से प्रोडक्ट मिले आपको? These are the products of self aldol condensation. अब आपका क्या होगा? क्रॉस aldol condensation होगा. क्रॉस aldol में देखिए एक बार क्या करेंगे हम. Please see. We have 2 molecules here. यहाँ पे हमारे पास कितनी molecules हैं? We have 2 molecules here. पहले मॉलिक्यूल का पूरा ले लेते हैं. ठीक है? In this case, first molecule का पूरा. That means 2 carbon atoms from here और यहाँ से 2 carbon atom. So 1 2 3 4. हाँ या ना समझ में आ रहा है? बताइए. 4 क्यों लिया हमने? पहले वाले का पूरा, नेक्स्ट वाले का 2. याद है कि नहीं याद है आप लोगों को भाई? अभी दिखाया था ना. हाँ या ना कुछ तो बोलिए. Yes, sir. All carbon atoms of one molecule, 2 carbon atoms of another molecule. ठीक है? So I have taken all carbons of CH3CHO, first molecule. ठीक है? Second carbon का हमने क्या लिया? 2 लिया है. Last carbon atom will get CHO. Second last carbon atom will get the remaining. तो remaining कितना था आपके पास? 1 था, CH3. Third last will get OH. बात आ रही सबको समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. H plus and heat 1 2 3 4. This is CHO. This is CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड. ठीक है? अब देखिए. Now I am going to take all molecules of the second and last 2 of the first one. ठीक है? ये तो क्या हुआ है? क्रॉस aldol हुआ है.
क्रॉस एल्डोल, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स लिए थे. नाउ हियर इन द सेकंड केस आई विल टेक ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लास्ट थ्री, दैट मींस 1 2 3, 1 2 3, देन द लास्ट टू ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. तो लास्ट टू में तो यही दोनों है, 1 2 3 4 and 5. ठीक है. Last is going to get CHO. Second last is going to get the remaining carbon. There is no remaining carbon. 5 carbon थे, 5 carbon आ गए. Third, you are going to get OH. H plus and heat के presence में 1 2 3 4 5 CHO and a double bond like this. ठीक है. तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट है, these are the cross aldol products. Done everyone? Yes or no? Please tell me. 1 minute, sir. Done guys? Yes or no? Please tell me. सब मुझे लिखी चलिए, आराम से लिखे लिखे समझ के लिखिए. Done, sir. Anyone still writing? Yes, 1 minute, sir. Okay. Done, sir. Now write next. Please write. Aldehyde and ketones containing no alpha hydrogens can react with, can undergo, wait a second, can undergo cross aldol condensation, can undergo cross aldol condensation with an aldehyde or ketone
containing with an aldehyde or ketone containing alpha hydrogens. ठीक है? Please look in this case. मान लीजिए आपके पास क्या है, HCHO प्लस CH3CHO. बताइए which one does not have alpha hydrogen? किसमें alpha hydrogen नहीं है? किसमें alpha hydrogen नहीं है? Sir, one. First one, sir. फर्स्ट वन. तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, वही आपका क्या बनेगा, OH वहीं पे बनेगा. ठीक है? सो यू हैव वन कार्बन एटम. So this carbon atom is going to get the OH. So carbon atom आपने दे दिया OH और यहां से आपने इसके CH कार्बन के साथ, है ना, अल्फा कार्बन के साथ ज्वाइन कर दिया and then CHO. So this has two hydrogens and this also has two hydrogens. ठीक है? अब इसके बाद H plus के साथ हीट, CHO and डबल बॉन्ड. बात आ रही समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए. Yes, sir. है ना? एक और एग्जांपल लिख लीजिए आपके पास है, मान लीजिए इस तरह से, दिस इज बेंजीन रिंग एंड CHO प्लस CH3CHO, OH नेगेटिव. ठीक है? तो कौन से कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बताइए, वन और टू में से. विच वन इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वन और टू? The one. वन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसमें आप OH लगाइएगा, OH, and then two carbons from here. This is your CS. This will CH3 will become CH2, and then you'll have CHO here. क्लियर है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए. चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइएगा. इसमें जनरली हीट की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू H plus and heat. What is the B product?
Done, sir. Send the answer on WhatsApp. Please send the answers on WhatsApp. Sir, sir, my mom is using the phone right now. Fine, then you can check your website, Roy. Others who have done, please send the answers. SAP everything is fine, but आपके आखिरी वाले प्रोडक्ट में OH नहीं होगा ना? देखिए, Yes, sir. ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए बस. Other guys, please send the answers. Yes, Umar, very good. Correct. Yes, Khalil, correct, very good. बट लेकिन आपको हम एक बात बताएं, आप लोगों को अगर हम ना इस तरह से दे देते तो आप लोग पागल हो जाते बिल्कुल. जिन लोगों ने आंसर भेजा उन लोगों के लिए भी हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों का मदद हमने कैसे कर दिया. अगर मैं आपको ये दे देता ना तो फिर आप पागल हो जाते हैं, है ना. सर क्या करें सर हम. तो आप लोग को ये प्लीज, लेकिन अब आप लोगों को ना ध्यान होना चाहिए कि आप लोग अपने हिसाब से रिएक्टेंट्स को अलग पलट के लिख लिया करें. ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा वो आपको ऐसे होगा, मतलब हो सकता है ऐसे भी नहीं हो, आपको इस तरह से दे दिया जाए C6H5CHO प्लस C6H5COCH3. ठीक है, तो बट प्लीज आप लोग ना स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखिए. इस मतलब इतना आप लोगों को अब आ जाना चाहिए. नहीं आ रहा है तो फिर इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस किया कीजिए. ठीक है, एनसीईआरटी में आपको इस तरह से सवाल मिल जाएंगे. चलिए, फर्स्ट वन. So first of all, identify the aldehyde that is not having any alpha hydrogen. That is the first one. The carbonyl of that aldehyde is going to get OH. Then we will have CH2, and then we'll have C double bond O, and then again the phenyl group. And there will be a hydrogen here. This hydrogen and this OH is going to get eliminated, forming a double bond, and the rest of the molecule is as it is. So these are the products. Please write this down. Now write next.
determining reactants of aldol from products. ठीक है. First of all, let us see if you have a molecule like this. 1 2 3 4 5 carbons. अच्छा, एक केस आपका बनेगा जहां पे when you have बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा, आपके पास OH ग्रुप होगा. फॉर एग्जांपल यू हैव दिस मॉलिक्यूल 2 3 4 5, दिस इज CHO. CHO के बाद आपके पास सेकेंड कार्बन में एक CH3 लगा हुआ है एंड थर्ड कार्बन में आपके पास एक OH लगा हुआ है. ठीक है. अगर आपके पास इस तरह का केस है ना, तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा एंड बीटा कार्बन. चलिए बताइए 1 2 3 4 5. व्हाट इज द अल्फा कार्बन हियर? व्हाट इज द अल्फा कार्बन हियर? चार्ट में बताइए. चार्ट में अल्फा कार्बन हिस्मा बताइएगा आप. ठीक है, पूछना ना पड़े आपसे है. Umar, can you please write the correct answer? What is the alpha carbon? हाँ ठीक है. Most of you are answering it correctly. The second carbon is alpha carbon. तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा, राइट. अल्फा और बीटा के बीच में आप बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए. ठीक है. यू आर गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा. ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और जो OH है, convert the OH to C double bond O. So you are going to have 1 2 3 C double bond O. टर्मिनल कार्बन, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना. यहाँ पे हाइड्रोजन है ही वैसे पहले से, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है. दिस हाइड्रोजन इज ऑलरेडी देयर. अगर नहीं आ रहा तो इतना भी बना दिया ना, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला है. ठीक है. नाउ दिस इज गोइंग टू गेट CHO and here you are going to get CH2. So you'll get plus. ठीक है, इस तरह से. So these are the two. ये कौन, दोनों के दोनों कौन से हैं? This is प्रोपेनॉल. Now let's take example. If you have C6H5 carbon with OH, carbon with hydrogen, and then you have CH2 CHO. तो इन दोनों को आपने तोड़ दिया. जो आपके पास OH वाला है, that will get converted to C double bond O. This will be C6H5 C double bond O and hydrogen plus CH2 वाले में क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन बस आप ऐड कर दीजिए CH2 वाले में. जो आपके पास अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन में C double bond O. So it will be CH3 CHO. तो यहाँ पे क्या करना, प्लीज सी. Change COH bond of beta carbon to C double bond O. Put one hydrogen atom on alpha carbon. ठीक है. छापी जल्दी छापी. पूरा का पूरा क्लास एल्डोल कंडेंसेशन में गया. ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, सवाल आते हैं. डेफिनेशन आता है एल्डोल कंडेंसेशन का. इसके बाद आपके पास they will give you reactants and ask you product. They will give you product and ask you reactant. ठीक है. तो इस वजह से सारी क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन ही चला है. Please do all the reaction that we have done in this class. छोड़ के बताइएगा किसी भी रिएक्शन को. Done guys, listen or listen me. 1 minute sir. जल्दी लिखिए. एक तो ये केस है, दूसरा केस है जब आपके पास क्या हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. ओके. सो वी हैव टू आल्सो सी हाउ टू डिटरमाइन द. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ना, चेंज दीज एरोस टू रेट्रोसिंथेटिक एरो. या तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए. ठीक है. और यू कैन राइट इट लाइक दिस, ऐसे लिख लीजिएगा, इस तरह से एरो बना लीजिएगा बस.
What are you saying, Umar? I cannot understand that. Then everyone, yes or no, please tell me. No, Umar, try to do this again. Read these lines and try to write down the products. आपको यहाँ पे alpha and beta को identify करना. This is your alpha, this is your beta. Break the alpha and beta. On beta carbon, you have to change the COH bond to C double bond O, and on alpha carbon, you have to put the hydrogen on alpha carbon. Okay, that's what you have to do. Nothing else. Yes, sir. Done. Those who have not done, I'm giving you 5 seconds. Please screenshot this. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Right, next. When we have alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. Okay. See, for example, if you have let's suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a CHO, and here we have 2 carbon atoms like this, and then you have a double bond here. यहाँ पे भी आप सबसे पहले alpha and beta carbon. So what is alpha? This red is alpha carbon, and this green is beta carbon, right? That is green. Yeah, that is green. This green is beta carbon. So you break both of these things. ठीक है, इन दोनों को आपने ब्रेक कर लिया. अब जो आपका बीटा कार्बन है उसमें आप सीधा लगा दीजिए क्या, सी डबल बॉन्ड ओ. तो 1 2 3 4 सी डबल बॉन्ड ओ. अब आखिरी में क्या रहेगा, हाइड्रोजन एक यहाँ पे है ही, वही हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, प्लस इसमें क्या लगाना है आपको, ऑन अल्फा कार्बन यू ऐड 2 हाइड्रोजन हियर. ठीक है, यहाँ पे अभी सिर्फ कार्बन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है. सो 1 2 3 4 सेम थिंग, डबल बॉन्ड ओ एंड हाइड्रोजन. ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. Okay, so this carbon atom has got CH2 now. ठीक है, डबल बॉन्ड हट के. एक और एग्जांपल लिख लीजिए. इफ यू हैव C6H5 double bond C double bond O and hydrogen CH2 CH3. This is your alpha, this is your beta. Break this bond. Beta में आपको क्या लगेगा, double bond O. So you have C6H5 CHO plus, and on alpha carbon I'm going to add 2 hydrogen. So you have CH3, then you have CH2, then you have this carbon atom, उसमें आप लगा दीजिए CH2, and then you'll get CHO. Please write here. Break the alpha beta double bond put C double bond O on beta carbon, put 2 hydrogen atoms on alpha carbon.
Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Sure. That's it for today. Please revise all the reaction. You will also get an assignment. Please do it before Thursday's class. Okay. आज ही आप लोग के असाइनमेंट अपलोड हम करवा देंगे. प्लीज उसको कर लीजिएगा. ठीक है. एल्डोल कंडेंसेशन एक बार में ही खत्म कर लीजिए. ठीक है. दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े. अब उसके बाद आपके पास जो कुछ ज्यादा रिएक्शन बचे नहीं है यहाँ पे. ओके. सो यू हैव ओनली 2 रिमेनिंग रिएक्शन. दैट इज एक तो कैनिज़ारो रिएक्शन है. कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है? कैनिज़ारो रिएक्शन में आपके पास किसी एल्डिहाइड और कीटोन में जब हाइड्रोजन नहीं होता है तब आप बेस के साथ हीट कीजिएगा. क्या होगा? कुछ का ऑक्सीडेशन होगा, कुछ का रिडक्शन होगा. सो यू विल गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा आपको. ओके. दैट्स बेसिक कैनिज़ारो रिएक्शन. देन देयर इज वन मोर थिंग दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अभी तक करते हैं. बस यहाँ पे प्रोडक्ट्स थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. CHO जो है आपका क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे दोस प्रोडक्ट्स विल बी मेटा प्रोडक्ट्स. ओके. सो ये दो बस रिएक्शंस रह गए हैं. इनको कर लेंगे, हो जाएगा खत्म. चैप्टर नहीं, चैप्टर तो नहीं, लेकिन एल्डिहाइड वाला पोर्शन, एल्डिहाइड कीटोन्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. ओके. सो देन वी विल बी रिमेनिंग ओनली विद कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन. ओके. थैंक यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर गाइस. Sir, Thank you, sir. Yes, yes, Asta. Tell me. sir, I have a few doubts. You told you. हाँ हाँ, अच्छा ठीक है. कोऑर्डिनेशन का ना. जी जी. Yes, tell me, Asta. Yes, Asta. Are you there? Yes, sir. 1 second. I'll take out textbook. Sir, it is a what is it? Textbook question, page Yeah. 261. Should I send it in WhatsApp? Tell me the page number. 261. 261. Exercise it. In text questions, like there are 4-5 questions. Oh, अच्छा जी जी. हाँ बताइए इसमें कौन सा सवाल? 9.6. I mean the second one. 9.6. इसमें सबसे पहले आप बताइए कार्बोनिल एंड Cl. तो इसमें से Cl क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है या फिर Weak field. लिगेंड है? Weak field again. Cl is Weak field weak and CO is strong. उसके बाद तो अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? वेट अ सेकंड. हाँ, वीक फील्ड लिगेंड है. देन टेल मी del O Pairing won't take place. del O ज्यादा होगा या पेयरिंग ज्यादा होगा इसमें? Pairing ज्यादा है ना. तो what बताइए, पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी. ठीक है, नो पेयरिंग. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आंसर नहीं आ रहा है. Why they both are tetrahedral? That is the question. Like I checked the NCERT solutions, and that also they just proved like electronic configuration. Can they prove that it is paramagnetic and diamagnetic? And then how is it like related with tetrahedral? They both are tetrahedral. Why is the question, हाँ. right? So how will you say?
आपको उसमें बस ये दोनों में sp3 आ रहा है कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन, ये बताइए आप। हाँ, sp3, yes sir. तो दैट इज राइट, इज टेट्राहेड्रल। अच्छा, और जो निकल का कोबाल्ट, सॉरी निकल कार्बोनिल वाला केस होगा ना, तो इसमें आई थिंक इट इज D8, राइट? Yes sir. तो D8 के कॉन्फिग 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, सक्रिय विक्रमण फेकोनी, ठीक है। So it is going to be फेकोनी D8 configuration, D8 configuration and 4s2 भी है, right? Correct? Yes sir. 4s2 भी है ना? अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास चाहे DsP2 हो या चाहे sp3 हो, दोनों के लिए क्या क्या खाली होना चाहिए? s ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। Yes sir. So that is why promotion of electron happens from 4s2 to 3d, ठीक है, to vacate the 4s subshell। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी में जाके डिटेल हो जाता है, and then you have the 4s subshell remaining here like this। और आपके पास जो p ऑर्बिटल है, this is your 4s and this is your 4p, both of these they form sp3, that is the reason। आपको हम आंसर इसमें से लिखा दे क्या, लाइक व्हाट आई मीन व्हाट यू शुड राइट, उस तरह से? Yes sir. ओके, Yes sir, done. ये लिख लिया आपने? हाँ sir. ओके, सबसे पहले तो आप इसको जरूर लिखिएगा कि वीक फील्ड लिगेंड की वजह से नो पेयरिंग एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से देयर इज पेयरिंग। ओके, ठीक है, उसके बाद जस्ट अ सेकंड, किसी हमने ना क्लास में इसका आंसर लिखाया था, बस उसको एक बार ढूंढ के कर दे रहा है, दे रहा है। Is right? Since chlorine is a weak field ligand, pairing does not take place. Therefore, it is paramagnetic and sp3 and tetrahedral, ठीक है। Next, carbonyl is strong field ligand. Pairing takes place, but all the d orbitals, एक second, pairing takes place,
hence it is diamagnetic. It is diamagnetic. But all d orbitals are filled. Hence it is tetrahedral and sp3. ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने दोनों के बारे में NiCl4 2 नेगेटिव एंड NiCO4 के बारे में आपने इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन दिखा दिया है सब में। ठीक है, एक जो स्टेप आपको ऐड करना पड़ेगा वो इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा कि सिंस 4s is not vacant, four s electron will be promoted to 3d. ठीक है, and you will get 4sp3. अच्छा, और दूसरा सवाल में ना आपको टेट्राहेड्रल एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा है, वो क्या था? Yes, sir. है ना, वो ध्यान में रखिएगा। आपको क्या एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों है। ठीक है, तो उसके लिहाज से मान लीजिए ये आपका ना 1 मार्क्स से भी सवाल आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। मान लीजिए आपके पास 1 या 2 मार्क्स में आएगा ना, तो बस आप ये बोलिएगा NiCl4s, in NiCl4 we have Cl which is weak field ligand, that is why there will be no pairing and it is paramagnetic. बहुत ज्यादा हुआ ना तो आप उसमें बता दीजिएगा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर बोलिएगा कार्बोनिल में आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट इज व्हाई पेयरिंग टेक्स प्लेस एंड देयर इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, below that only like 9.8. इसमें क्या दिक्कत है आपको? So can you explain like inner orbital complex and outer orbital complex? अरे ये आपको समझ, दोनों का आपने ये निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला? नहीं, I think I didn't do it. आपने ऐसे देखा ना, हम बता रहे हैं आपने क्या किया होगा। आपने देखा NH3 दोनों में है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है दोनों, तो दोनों में पेयरिंग होगी। जब दोनों में पेयरिंग होगी तो दोनों में तो सेम तरह का कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, राइट? Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, डी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी देखा आपने अभी तक? I might have done. पता नहीं किधर है. असल में देखिए कोबाल्ट, अच्छा एक बस ये बताइए कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कोबाल्ट का, सिर्फ कोबाल्ट, नॉर्मल कोबाल्ट 27. 27, राइट? ठीक है, आपके पास क्या है 27 D7। और निकल का यहाँ पे, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ, निकल में D8 होगा, राइट? Yes, sir. है ना, D7 D8। आपको ये पता डी स्केल आपने बनाया है कि नहीं बनाया है? Yes, sir. डी स्केल आपने जो लेक्चर्स थे उसमें डी स्केल होगा ना, दिया हुआ हमने। Yes, sir. I made. उसमें हमने बताया ना कि जब D8 रहता है तो आपको देखने की जरूरत नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड है। The क्योंकि first 3 and the last 3 में it's not required. हाँ, तो D8 में तो आपके पास देखिए 1 2 3, अब मान लीजिए आपको पेयरिंग करना है 3 4 5 6 7 और 1 8, है ना? पेयरिंग करके आपने कर दिया यहाँ पे। अब तो D में कुछ खाली ही नहीं बचा ना, सो दिस 3D इज फुल। ये तो 3D से बन रहा, तो 3D फुल हो गया है, तो आपको क्या मिलेगा 4D वाला मिलेगा, 4D एंड देन S एंड देन P2। ठीक है ना, तो 4 DsP2 होगा, सॉरी DsP4, आप लीजिएगा 4S, उसके बाद आप लीजिएगा 4P और लीजिएगा 4D, तो आपके पास sp3d कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इट विल बी व्हाट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट D7 के केस में 1 2 3 4 5 6 7, since 1D is vacant here I will get 3D आप यूज कर सकते हैं, 4S यूज कर सकते हैं, 4P यूज कर सकते हैं, तो DsP2, सॉरी DsP3, हाँ, this will be inner orbital complex। Okay, sir. समझ में आ गया ना क्या करना है? Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए। And
sir, the naming nomenclature ka, जी writing the formula. I mean, writing the structure. Like the name is given, and have to write the formula. एग्जांपल बोलिए आप. Tris ethane, ट्रिस इथेन 1,2-diamine. है कहीं पे? हाँ, it is in textbook only. Page 251. ट्रिस इथेन 1,2-diamine कोबाल्ट 3 आयन. Chromium 3 chloride. अच्छा 250 क्या बोला आपने? 253 251. 251. It's easy तब to यहाँ पे identify like what is used ki okay, there is amine, there is the quantity also. It's like how to put it together, and there is like the what is it, charge I think, or something I'm getting confused with. चार्ज में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस और कुछ नहीं है. Charge and ठीक है. even the number on the ligand, I think, not ligand. I forgot. हाँ काउंटर आयन के कितने नंबर होंगे, राइट? हाँ, yes. Cl1 होगा, 2 होगा, 3 होगा उसमें. हाँ, yes, that. ऑक्सीडेशन स्टेट तो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट तो शायद आपके इसमें दिया हुआ होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत नहीं होगी. सबसे पहले हमें क्या बोला था, क्या लिखना है? एक बार कराया है ना आपको जी. कॉम्प्लेक्स आयन को लिखना है, राइट? तो क्रोमियम Yes. En होल थ्राइस. ठीक है. En is Cl. Cl अभी नहीं लिखना है, अभी इतना ही लिखिए आप. ठीक है. Okay. अब उसके बाद आप बताइए क्या पूछा इन्होंने. हाँ यहाँ पे बात बताइए कि En पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. लिगेंड की वजह से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? 0, बिकॉज इट इज न्यूट्रल. Yes, sir. नाम से पता चला ना, अगर O नहीं है आखिरी में तो न्यूट्रल है, राइट? Yes, sir. ठीक है, इट इज न्यूट्रल. तो इसकी वजह से तो 0 है. क्रोमियम की वजह से कितना चार्ज है? 3 plus 3. तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज हो जाएगा? 3. +3. ठीक है. हाँ, plus तो आपको कितने Cl नेगेटिव चाहिए बैलेंस करने के लिए? कितने 3 क्लोराइड Cl. क्लोराइड आयन चाहिए? 3 Cl3 आप लिखिएगा. ठीक है. Cr En होल थ्राइस और Cl3. Okay, so like how much पूरा this entity का charge होगा उतना will put it in the counter आई बात and समझ में to या balance. नहीं है? Yes, sir. Yes, I understood. हाँ उसी तरह से. ठीक है. अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इस तरह से होता SO4 होता. ठीक है ना, डाई सल्फेट होता है यहाँ पे. तो सल्फेट में कितना चार्ज होता है? SO4 सल्फेट में होता है SO4 2 नेगेटिव चार्ज होता है. 2 माइनस. तो फिर क्या करते हैं? So 3 SO4. ये होगा 3 तो 6 हो जाएंगे ना, SO4 2 नेगेटिव. तो अच्छा, 2 negative is already there, so only one charge we need now. How will you add ऐसे that? कीजिएगा फिर आप. देखिए हम बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया. ठीक है, कॉम्प्लेक्स. और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा आप जो काउंटर आयन है, जो भी काउंटर आयन. कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? +3 है ना, और काउंटर आयन पे 2. ठीक है. पॉजिटिव पॉजिटिव लिखिएगा दोनों को. आपको पता है काउंटर आयन जो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, आप सिर्फ नंबर लिखिएगा, चार्जेस मत लिखिएगा. ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स पे 3, काउंटर आयन पे है 2. 2. ऐसे कर दीजिए. तो कॉम्प्लेक्स याद है ये इस तरह से करते थे हम लोग 10th 11th में, Yes, sir. Cross multiply. है ना. तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा Cr En होल थ्राइस, ये 3 मॉलिक्यूल, एंड यू विल हैव SO4 होल Okay, okay. थ्राइस. अच्छा. ठीक है. तो बिल्कुल वो जो आयनिक कंपाउंड्स हम लोग जो बनाते थे ना, उसी तरह का चार, मतलब एटलीस्ट आपको अगर ये बताना कि फॉर्मूला बताना है उस केस में, तो आपने अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स और काउंटर आयन ऐसे लिख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. So Even we for the would case have to of write the charge, the 2 minus or +3. आयन रहेगा तो चार्ज लिखना पड़ेगा
आपको if it is iron, लेकिन आपके पास देखिए ये पूरा मॉलिक्यूल है, राइट? सो यू डोंट हैव टू राइट द चार्ज. कहाँ पे Okay. चार्ज आप बात करें? आपको ये है आंसर. दिस इज योर आंसर. Yes, sir. दिस इज योर आंसर इफ इट इज सल्फेट. ठीक है, Hmm. कर लेंगे आप. Yes, yes, sir. ओके. एनीथिंग एल्स? So one more question was there from like the exercise. हाँ बताइए. 9.25, page 265. Page 265. 9.25. Five. अच्छा, explain the violet color of compound on the